Do you have a budget of 5 lakh rupees and you want a car that is fast but not unreliable, that is affordable but not cheap, that is premium but not expensive to maintain, and that is comfortable but also a good handler? Well, you have come to the right place because I was in this exact same position almost 3 years ago, and I bought this car which does everything all at once without burning a hole in your pocket. Ladies and gentlemen, say hello to the Honda City. Originally launched in year 2013, this car has been in the market till 2020, but आज हम focus करने लगे हैं 2017 से पहले के pre facelift models पर, because that is what you are going to get under 6 lakh rupees in the market. 6 lakh rupees is a price segment जहाँ पे आपको कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं मिलने लगी है. मिलेगी तो सिर्फ Alto, Quid and base models of the Tiago, Wagoner, and this car is quite an upgrade over them. And if you live Delhi NCR के बाहर, then that is even better because these cars 2014-2015 models are available for as low as 3.5 lakh rupees. If you live in Delhi NCR, well, that is a sad story. You will not be able to get the diesel, but yeah, you can still get the petrol and use it for the next 5 years. Now, people usually complain that cars so old can develop squeaks and rattles, especially from Japanese brands, but this does not rattle at all. Now, I know that is not the best way to test for rattles, but trust me, I have been driving this car for the past 3 years. This car has been driven for 10 years and has completed almost 1 lakh kilometers and it still does not rattle. So that is a good sign of quality. बात करें इस गाड़ी के another positive की, and that is its legroom. There's loads of it. Headroom आपको गाड़ी में थोड़ा कम मिलेगा, but yeah, it is still not a problem for the average Indian. एक और पॉजिटिव है इस गाड़ी का इसकी बूट स्पेस. आपको इसके अंदर 500 लीटर का स्पेस मिल जाता है एंड आप इसके अंदर बेसिकली एक पूरा घर मूव कर सकते हैं. बात करें इस गाड़ी के टायर की, स्पेयर टायर आपको मिल जाता है 175 सेक्शन, बिकॉज आपको स्टॉक रिम्स भी 175 सेक्शन 15 इंच मिलते हैं, विच इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि आपको जो 175 सेक्शन टायर स्टॉक मिलते हैं इस गाड़ी में, दे डू नॉट provide any sort of grip. They are purely mileage tires, and hence I have upgraded to 195 section 60 profile tires, and I have also upgraded the stock boring OEM rims for these Borbet RS rims. बाकी बात करें तो जब मेरे पास स्टॉक रिम्स थे मैंने उनको भी ड्यूल टोन पेंट करा दिया था, because yeah, they do not look very good. So yeah, no matter which variant do you buy, I would suggest upgrading to 195 section 60 profile tires, because these tires provide a lot better grip, a lot better aesthetic and a lot better handling as well. बाकी अब चलते हैं अंदर. इंटीरियर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एक शानदार डिज़ाइन मिल जाता है, which does not look outdated even today. Since this is a V variant, it does not get all the features, but it gets you electrically adjustable and foldable ORVMs. बाकी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, आपको मिल जाता है ऑटो एसी, आपको आगे मिल जाती है फॉग लैंप्स, आपको मिल जाता है ये ऑटो एसी, एंड इसके बाद आपको मिल जाता है मैनुअल डिमिंग IRVM, आपको मिल जाता है ट्विन कैबिन लाइट्स अप फ्रंट, एक आपको मिल जाता है सेंट्रली माउंटेड, रेस्ट आपको इसमें मिल जाता है सनवाइजर विद मिरर, जो कि यूसेज ना होने की वजह से हैज़ डेवलप्ड स्क्वीक्स. सो या दिस इज द ओनली थिंग दैट स्क्वीक्स. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर को नहीं मिलता मिरर, सो या नॉट अ प्रॉब्लम. दिस कार इज बिल्ट अराउंड प्रैक्टिकलिटी. आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज मिल जाता है, आपको इसके अंदर ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आपको एक स्टोरेज स्पेस वाला सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है फ्रंट में, आपको इसमें मिल जाते हैं बॉटल होल्डर्स एंड अ सेपरेट स्पेस होल्डर इन एवरी डोर. पीछे प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको ये रेस इवेंट्स मिल जाते हैं, आपको ट्विन चार्जर्स मिल जाते हैं, आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों डोर्स पर. Now, before the driving experience of this car, let's discuss how my experience with this car has been and what you should check while you go to check your Honda City, and what you need to know about the maintenance and the reliability of this car. Now, talking about the maintenance part of this car first, a general routine service is going to cost you somewhere around 4 to 6,000 rupees, and if you buy a diesel, it is going to be slightly higher. Now, spare parts की availability में आपको कोई problem नहीं आने वाली है, because this car's spares are available in plenty. But you are going to face an issue if you want Honda genuine parts in your car and you do not want to visit Honda service center. And the reason behind this is Honda does not sell its spare parts to third party vendors. अगर आप एक सियाज लेते हैं या आप एक वर्ना लेते हैं तो उन दोनों के स्पेयर पार्ट्स आपको किसी भी रोड साइड मैकेनिक पर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक Honda City लेते हैं तो आपको उसके स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन नहीं मिलेंगे. आफ्टर मार्केट ऑप्शन स्टिल मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिलायबल ऑप्शन हैं, बट इफ यू आर समवन हु वांट्स जेन्युइन पार्ट्स ओनली, you need to visit the Honda service center only. Now, Honda City के spare parts की cost is already slightly higher than that of the Ciaz and the Verna,
What you also need to consider is the fact that service centers do charge more labor cost than the market rate. So that is something you need to consider. Otherwise, the maintenance part of this car is absolutely creamy. Now coming to the things that you need to check while finalizing your Honda City from the used car market. Number one, make sure you go for the V trim at least. The V trim of this car is loaded with features like auto AC, front fog lamps, cruise control, 15-inch alloy wheels, electronically adjustable and foldable ORVMs, a front center armrest with storage, twin cabin lights, etc. Basically, अगर आप एक V trim लेते हैं तो this car is not going to make you feel like you have done a compromise. Also, most of the Honda Cities that were sold in this generation were the V trim. So आपको ये वेरिएंट ढूंढने में कोई ज्यादा मुश्किल आने नहीं वाली है. Coming to the wear and tear part of it, what you need to consider is the suspension and the brakes. Suspension and brakes of this car generally wear out sooner than other cars. For example, I had to change the brake rotors of this car at around 70,000 kilometers. And right now the car is at 90,000 kilometers, and I have also done a suspension rebuild at the front. Now suspension and brakes are still wear and tear parts, and आपको ये parts कभी ना कभी change करवाने पड़ते हैं. Talking about serious expensive issues, अगर आपको गाड़ी के steering behavior में थोड़ी weirdness feel हो रही है, there is some unnatural play in the steering wheel, just make sure you reject that car. The reason behind that is because some units of the Honda City are affected with a faulty steering rack. एंड ये जो स्टीयरिंग रैक है आपको 90,000 के बाद रिप्लेस करवाना पड़ सकता है, विच इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. Apart from this, there were not really a lot of issues with this car, and you just need to perform regular checks like rust and accidental damage, etc. लेकिन nothing in this world is perfect, and same goes for this car. इस गाड़ी को ओन करने के 3 साल बाद आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं which I don't like at all. Number one is its AC. In peak Indian summer, this car's AC simply takes a lot of time in cooling down the cabin, and it might get frustrating at times. दूसरे नंबर पर आती है इस गाड़ी की सस्पेंशन. Till the time the roads are smooth, this car is going to be extremely planted, and it is going to be very confidence inspiring on highways. लेकिन when you encounter expansion joints and undulations on the highways, this car can get unsettled at times. Another negative thing about this suspension is the backseat comfort. Again, till the time the roads are smooth, this car is going to be extremely comfortable. लेकिन as soon as you encounter expansion joints and undulations, this car goes through a lot of vertical movement, especially at the back, which makes the passengers in your car very uncomfortable. Apart from this, nothing has really disappointed me in this car, and it has been a darling through my ownership years. Now talking about other things about this car, number one, the mileage. गाड़ी में आपको माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने लगी पेट्रोल इंजन में. द मैक्स यू आर गोइंग टू सी इज 17 और 18 ऑन अ गुड डे, एंड एवरेज इस गाड़ी का मिक्स कंडीशंस में रहता है अराउंड 14 to 15 kilometers per liter. If you want mileage, you need to go towards the diesel, which gives a lot more mileage. Talking about figures, that car easily gives you around 20 to 25 kilometers per liter on the highway, and even in city that car delivers at least 15 kilometers per liter. Diesel engines in general are very loud, but Honda का जो 1.5 डीजल है वो डीजल्स के लेवल से भी थोड़ा ज्यादा लाउड है. सो अगर आप एक Honda City डीजल लेने जाते हैं तो मेक श्योर आप उसकी एक टेस्ट ड्राइव लें, एंड प्लीज चेक फॉर द कंफर्ट लेवल्स ऑफ द साउंड फॉर योरसेल्फ. बाकी चीजों की बात करें तो Honda City का जो डीजल इंजन है उसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट एट चीपर प्राइस देन द 1.5 पेट्रोल इंजन फॉर श्योर. अब ये तो हो गया Honda City की जनरल मेंटेनेंस एंड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में. लेकिन जब आप मार्केट में लेने जाएंगे गाड़ी, तो आपको पेट्रोल लेनी है या डीजल लेनी है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. बेसिकली यू जस्ट नीड टू चेक व्हाट आर योर नीड्स. अगर आपको बस एक कंफर्टेबल डेली ड्राइवर चाहिए फॉर योर ऑफिस एंड कॉलेज कम्यूट्स, you should go for the Honda City diesel engine. That engine is slightly loud, but that is a compromise you will have to make for the 25 kmpl figure. What that engine also gives you is a lot of low end torque, and this low end torque is going to help you in city driving. हाईवे परफॉर्मेंस उस इंजन का ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्टेज 1 ECU ट्यून कराते हैं अपनी गाड़ी में तो उस गाड़ी की रिलायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन आपको मिलेगा 20 से 25% ज़्यादा पावर फॉर जस्ट अराउंड 30,000 रुपीज़. लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू हैव फन विद हिज कार, my buddy, you need to get the 1.5 petrol today. Why do I say this though? Well, stay for the next clip.